स्वधर्म के ऊपर सोचा किसी ने कि क्या मैं स्वधर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ? हाउ वाज इट? मैंने तो कई बार सोचा, एंड हर आई बार। actually the intention was to just to start questioning कि क्या ये मेरा स्वधर्म है, तो एटलीस्ट दैट impression is created कि हाँ स्वधर्म कुछ होता है। बाकी तो अभी पढ़ेंगे हम स्वधर्म क्या है, और हमारी जो खुद की जो धारणा है स्वधर्म की वो ऊपर आ जाएगी इतनी बार अपने आप से पूछा है तो। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इट क्लियर कि स्वधर्म असल में क्या है और हम कितना क्या समझते हैं, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। दैट वाज द होल आइडिया ऑफ गिविंग दैट होमवर्क कि क्या मैं स्वधर्म कर रही हूँ। ऐसा यदि पूछा है अपने आप को दिन में एक बार भी, तो some footprint has been created. And yes, congratulations for the footprint on the moon. यस, मतलब कि जब भी हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं ना, तो वो स्वधर्म नहीं होता। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। Yes. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ तो था, मतलब मैं मेरे घर की बात बताती हूँ। कुछ तो था और हम, मतलब मैं, धैर्य और भावेश ऐसे डिनर के लिए बैठे थे, और धैर्य को ऐसा है कि उसको कांदा लहसुन अच्छा लगता है, और मुझे, मतलब हम लोग कम खाते हैं, तो फिर मुझे दोबारा ना बनाना पड़े तो मैंने वही बना दिया, एक ही सबका भाजी बनाया और वैसे सब किया। तो उसने मतलब खा लिया जबरदस्ती, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शॉर्टकट हो गया ना, मतलब मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, मतलब अलग से नहीं बनाना है, मैं चोरी कर रही हूँ ना मेरे काम में, मेरे स्वधर्म में। और अगर मैंने टाइम लेके उसके ऊपर काम किया होता, मतलब अच्छे से उसको जैसा पसंद है, मेरा अलग से उसका अलग से, वहां पे मैंने टाइम दिया, दैट इज कॉल्ड तप। सो मतलब ऐसे, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए कभी भी। आपकी, मतलब मेरी ड्यूटी है कि डिनर मुझे बनाना है, शाम को सब लोग साथ में बैठ के खाते, तो जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे दूसरों को भी अच्छा तो तो उसका लगना अच्छा चाहिए ना, होना उसका भी चाहिए, पेट सही। भरना चाहिए जैसे मेरा पेट भरना, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए। सेटिस्फेक्शन तो स्वधर्म करके ही आता है। यस। गुड गुड, अभी पढ़ते हैं। चलो, कौन पढ़ रहा है आज? सुमति पढ़ हाँ, रही है क्या? नहीं, जाने दो। चलो, कोई तो पढ़ो। हाँ चलो, शुरू करो। कोई ठीक है, पढ़ कौन? हाँ तू ही पढ़। पढ़ ले। पढ़ू। मुझे लगा मैम पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं वेट कर रही थी। नहीं, ज्योति पढ़ रही है, चल, चल। हाँ मैं पढ़। अच्छा, it is page 24, point number 12. This is. It is not good for me to adopt another's dharma, however superior it may appear. I like sunlight. It helps my growth. I worship the sun. But if, for that reason, I try to get close to the sun, I would be burned to ashes. Compared to the sun, the earth may appear worthless. It may not be self luminous. Still, I should strive for self development by staying on the earth, which is my rightful place, so long as I lack the capacity to stand the sun's powerful blaze. If someone were to say to a fish, milk is better than water, come and swim in the milk, will it accept? It can survive in water only. In milk, it will die. A beautiful example. एब्सोल्युटली। ये कितना स्ट्रॉन्ग बोला है ना। Yeah, और डॉक्टर ने very भी nice. धर्म का जब डिस्क्रिप्शन किया है योगा ये साइक्लोपीडिया में, तो धर्म इज टू मैन एज वाटर इज टू द फिश। धर्म टू अ मैन इज एज वाटर टू द फिश। तो उसके अंदर हम चोरी करेंगे तो फिर मरेंगे ही ना। Mm. चलो,
Another's dharma is not to be adopted even if it appears easier to follow. Quite often, the apparent easiness is deceptive. If someone is unable to look after his family properly and gets fed up, renounces the world and becomes a recluse, it would be sheer hypocrisy, and such renunciation would also be burdensome. His passions will reassert themselves at the slightest opportunity. Even if he goes to the forest, he would build a hut for himself. Then he would put up a fence to protect it. And in the course of time, his involvement in worldly affairs will increase with a vengeance. On the other hand, there is nothing difficult in sannyasa if one's mind is truly detached. Indeed, there are many sayings in the Smritis to this effect. It is the dispositions of one's mind which matters, which decides one's dharma. The question is not whether it is high or low, easy or difficult. What matters is that there should be real inner growth and genuine fulfillment. Hmm. Disposition of one's mind that matters is what I gather from here. Hmm. Natural inclination of the mind, in which the mind really finds itself. कि हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है. असल में जब सही निर्णय हम लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ही मन को एक संतोष लगता है. You look at your state of mind, योगिता, जो तूने अभी शेयर किया, in that decision when you were taking of doing a shortcut, look at the state of your mind. And at another time when you have not taken shortcut and done your work thing properly, look at your state of mind. You will easily be able to identify what is really most suitable and conducive to your mind also. और मुझे बोलना है, जब बोलना. मैं ना ये ओम शांति जो बीकेएस का जो मेडिटेशन है ना, उसका जब भी मैं कोर्स कर रही थी ना, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपने ये काम सही किया है या गलत किया है वो आपको कैसे पता चलता है. मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही पता चलेगा. अगर वो काम करके आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, दैट इज सक्सेसफुल. और अगर वो काम करके आपको गिल्ट आ रही है, टेंशन आ रही है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसका मतलब कि वो काम गलत है. ऐसा तो मतलब हम हमेशा दूसरों की राय लेते रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर ही रहता है. तो वो मतलब वहां पे मुझे बहुत ऐसे छू गया कि तब अभी मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सही किया. तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है. सांख्य बोलो, गीता बोलो, ये मेडिटेशन बोलो, ये स्क्रिप्चर्स जो है वो मतलब अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ है. हम लोग बाहर जाते जाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसा तो ऐसा अच्छा लगता है. Absolutely. It's all about yourself. यदि खुद से पूछने लग जाओ, खुद की सुनने लग जाओ, तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है. हाँ. क्योंकि सारा ज्ञान है इधर. यस यस. ज्योति क्यों हंस रही है? मैं वही बोल रही हूँ, सारी दुनिया को पूछ के हो जाता है, फिर अपने अपने आप के अंदर देखो तभी आंसर आते हैं. सबको पूछने के बाद. अब पहले तो शुरुआत वहीं से होती है, सबको पूछते पूछते. हाँ, बट यार सही है. सब जगह देखा. वो कुछ है ऐसा, गाना भी है ना, वीर लक्ष्मी होती तो बोलती थी, एक गाना है ऐसा. इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से उसके बारे में बातचीत न करें, किसी की राय न जाने, पूछें. हाँ. बात ये है कि हम कभी कभी दूसरों की सुन के हमें अपनी जो अपने को जो कहना है वो यदि दबा हुआ होता है, यदि वो छुपा हुआ है हमारे से, हम अपने आप को सुन नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों के थ्रू हम अपने आप को सुन पाते हैं कभी कभी. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अल्टीमेटली इट इज यू. तो अल्टीमेटली तो है, उसके लिए जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़े वो करना पड़ेगा. हमें अपने तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े वो अपनाना चाहिए, लेकिन पहुंचना हमें अपने आप तक है. मैम, जब मैंने कहा ना कि
दूसरों से पूछना, उसमें हमारे जो टीचर्स गुरु वो सब नहीं आते, so the authority also matters जिससे आप पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हम उसको ही सही मान के फिर चलते रहते हैं कितनी देर उसी भ्रम इज द वर्ड विच इज कमिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड, बट वो उसी डिल्यूजन में रहते हैं। हाँ सब बोल रहे हैं तो मैं वैसी ही हूँ, और हाँ, बोलते चलो यही हमारा सच है, यही है। बट लाइक व्हेन यू मीट योर ट्रू गुरु, और जब जब गुरु बताते हैं कि नहीं बाबा ऐसा नहीं, ऐसा भी है, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दैट्स व्हाट व्हेन आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट माय सेल्फ देयर। of course it makes a big difference. It ऑफ makes a कोर्स। big difference because there is a good side and the bad side in you. सत्व रजस तमस तीनों है। तो हो सकता है कि तुमने अपना खाली गलत साइड ही जिसको दिखाया उन लोगों से पूछा, क्योंकि हमारा कौन सा साइड किसकी तरफ आता है वो फर्क पड़ता है ना। डिफरेंट लेकिन शेड्स, जो या। डॉक्टर जयदेव जैसे कोई सात्विक गुरु जैसे हैं, तो वो अपने पूरे को जानते हैं, जो साइड हमने को भी नहीं मालूम है वो भी मालूम होता है वो उनको। सही। तो वो पहचान तो कम से कम खुद करनी होती है। हम्म। ग्रेट, वेरी वेरी वेल सर। चलो आगे चले। But the devout ask, if sannyasa is always unquestionably superior to the way of fighting, then why did Lord not make Arjuna a true sannyasi? Was this impossible for him? Certainly not. But would it have done any credit to Arjuna? It would have offered no scope for Arjuna to exert himself and excel in his efforts. The Lord gives us freedom. Let everybody make efforts in his own way. Therein lies the charm. A child enjoys sketching figures with his own hands. He does not like anybody else holding his hand for this purpose. If a teacher just goes on rapidly solving all the mathematical problems himself for the students, how would their intellect develop? The teachers and the parents should only guide the children. God guides us from within. He does nothing more than that. There is no charm in God shaping us like a potter. We are not earthenware. We are beings full of consciousness. Wow. बहुत सुंदर। बोलो, what do you gather from here? Just makes you reflect, ma'am, on the journey in life so far. How earlier we used to just keep on मतलब पहले ऐसा लगता था अरे इतना आसान था, मतलब पहले किसने क्यों नहीं हेल्प किया, या ऐसे क्यों नहीं हुआ, यू ऑलवेज लुकिंग फॉर Hmm. सॉल्यूशन आउटसाइड, आउटसाइड, not realizing there was this invisible force that is always there protecting, guiding, making us a better version when we are going through this whole journey, this process. And the process is so important for us to be where we are today. And so whatever has happened is all good. अच्छा ही है जो हुआ है, जो अभी भी आगे भी होगा वो भी अच्छा, अगर कहीं कुछ गैप है वो भी सही हो जाएगा. So we should enjoy the process. आएगा. And I love this whole thing. बहुत अच्छे से. Yeah. God is shaping us like a potter. धीरे धीरे, slowly, slowly, keeping us, giving us solutions. I mean, situations rather. To God guides us from within. He does nothing more than that. There is no charm in God shaping us like a potter. We are not earthenwares. Plastic क्या है? Earthenware तो छोड़ो. We don't allow anybody, anything or anybody to shape us. But we are beings full of consciousness. Wow, that's what strikes you. और ये सन्यास की बात क्यों हो रही है ऊपर? अर्जुन ने बोला था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा. और आगे भी बात होती है, डिस्कशन होती है वहां पर. Krishna has said
that sannyas is very good. He appreciates and praises sannyas. So probably that is why Vinoba Bhave is putting that question here itself. कि यदि वो संन्यास ले भी लेता तो would Arjun be, Arjun himself would be able to appreciate himself. जैसे जो काम हमारा नहीं है यदि वो कर भी लिया जाए तो क्या हम उसके लिए अपने आप की तारीफ कर लेते हैं? नहीं हो पाता है, क्योंकि जो अपना बेसिक नेचर है वो निकल के रहता है। तो संन्यास भी ले लेगा तो इसलिए कहा है ना, वो आगे ही कह दिया कि वो जंगल में जाएगा, संन्यास ले लेगा, सब घर बार छोड़ के जाएगा, तो वहां पर भी कोई एक सेना इकट्ठी कर लेगा, वहां पर भी कोई जानवरों को मारेगा, वहां और किसी को बचाएगा। क्योंकि जो क्षत्रिय स्वभाव है वो तो है, वो उसको संन्यास में सुख नहीं लेने देगा, और he will not be able to appreciate himself as a sannyasi. But would it have done any credit to Arjuna? Therefore he questions that. Yeah, संन्यास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अर्जुन यदि संन्यास ले और वो भी ऐसे समय में, तो बिल्कुल भी नहीं. It would have offered no scope for Arjuna to exert himself and excel in his effort. Compromise करके, could he have excelled in his effort? All his life, he had focused on being a Kshatriya. Never had he earlier thought of being a sannyasi. So Lord gives us freedom. यहाँ पे क्या बोल रही है? Arjun gives that like last week we read that Arjun gives the reason why he doesn't want to fight. It is himsa against the kin, all that he says. Yes. But that is because he's in that moment of stress, moment of attachment. If he were to really take sannyas and go somewhere, all that, when the sanity comes back, he would have realized कि मैंने जो किया वो मैदान छोड़ के भागने का काम किया है. Exactly. In fact, विनोबा भावे ने एक जगह कहा था ना वहां पे कि लॉर्ड कृष्णा ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया अर्जुन की. इतने सारे उसने जो लॉजिक रखे, कृष्णा हैज नॉट आंसर्ड एनी ऑफ देम, नोइंग वेरी वेल कि ये सारे सब उसके दिमाग की उस क्षण की खाली उपज है, खाली उस स्थिति को जस्टिफाई करने के लिए, कि इस समय जो उसके दिमाग में चल रहा है सिर्फ उसको जस्टिफाई करने के लिए, नथिंग एल्स. लेकिन ये वो गुरु ऐसा है उसके पास में जो इस चीज को देख पा रहा है. Let everybody make effort in his own way. Therein lies the charm. A child enjoys sketching figures with his own hands. He does not like anybody else holding his hand for this purpose. कैसे अपने आप उसको करना होता है ना, छुड़ा लेता है हाथ. अपन रास्ते में जा रहे होते हैं, अपन उसका हाथ पकड़ के चलाना चाहते हैं. He wants to go free. और हम छोड़ते नहीं है तो वो सीखता नहीं है. छोड़ देंगे, थोड़ी गलती करेगा तो ही समझ में आएगी, तो ही सीखेगा. अर्जुन ने इतना सारा सब दलील दी, कृष्ण उसको बीच में भी तो रोक सकता था ना, बहुत बहुत हो गया. नहीं, उसको सारा बोल देने दिया, जो है मन में निकाल दे. बोल ले, तेरी तरफ से लॉजिक तेरा पूरा कर. If a teacher just goes on rapidly solving all the mathematical problems himself for the student, how would their intellect develop? तुम लोगों ने सुना होगा मेरे से भी कई बार कि अब मेरे को मालूम है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं करूं क्या करूं? I can't, because that other person is not willing to accept the problem.
So I cannot help that person solve it. जब तक सामने वाला, so what I can only do at that point of time is put it back in front of that person, put it again and again in front of the person. Let that person come to a point wherein one can accept that, yes, this is the problem that I need to be working upon. तो हालांकि मुझे प्रॉब्लम भी दिख रहा है, मेरे को ये भी दिख रहा है कि सोल्यूशन क्या है, बट आई कैन नॉट सॉल्व इट. I can only enable the other person to arrive at the problem clearly and face it oneself and solve it. In fact, that's the role of the teacher. Doctor never used to give a solution to people. He used to always, he used to allow them to speak, and if he found that there's no clarity, he would put the pros and cons in front of them and say, make your choice. A good teacher will never give a solution. I remember reading the story. One person praying to the god, asking for goods and flowers. So he was given a cactus plant. You nurture it and see, and it gives such a beautiful plant when it really when it flowers. It takes its own time. वो रेडीमेड चीज में वो मजा नहीं है जो मेहनत करके मिलता है. That is the difference between regular food and fast food. Exactly. Oh wow, good comparison. योगिता ने टोन सेट कर दिया आज के लिए. Fast food and regular food. Good one. आगे चलो. From all this discussion, it is clear that the purpose of the Gita is to remove the delusion that stands between us and our Swadharma. Arjuna was confused about his dharma. He was gripped by a delusion about his Swadharma. When Krishna castigates it, he himself admits it. The Gita's main task is to remove the delusion, that attachment. The Lord asks Arjuna at the end of the Gita, "O Arjuna, how has your delusion gone now?" And Arjuna replied, "Yes, Lord, the delusion has fled away. I have realized what my Swadharma is." Thus, taking into consideration both the beginning and the end of the Gita, it is clear that the removal of delusion is its central message. This is the purpose of the Gita, as well as of the whole of the Mahabharata. Vyasa had said right at the beginning of the Mahabharata that he was lighting this lamp of history to dispel delusions in the minds of the people. Wow. बोलो क्या भला लगा इसमें? स्वधर्म के बारे में कुछ है और? Gita is to remove the delusion that stands between us and our Swadharma. So if we have spent this week asking ourselves at least once a day, for at least one activity, this is my Swadharma, then this question would have arisen. Okay, it is very natural for me to know my Dharma, then why do I have any doubt? Right? But whenever there is doubt, that means कुछ ना कुछ आड़े आ गया है. आपके और आपके स्वधर्म के बीच में कोई पर्दा आ गया है. So if you're gripped by delusion, means tamas, delusion is tamas. Yes, some mist, some confusion. तो कभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो समझ लो कि इस मनस्थिति में, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया, इट इज द एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट मैटर्स, द भाव. सो यदि कंफ्यूजन है, डाउट है, यानी कि स्वधर्म का, यानी यू आर नॉट इन टच विथ योर सेल्फ टू नो योर स्वधर्म. यस, सो फिर कहीं ना कोई ना कोई क्लीनिंग करने वाला चाहिए. और जिन्होंने दिमाग का डस्टर यूज किया हुआ है, उसके पास तो दिमाग का डस्टर यूज करना भी याद आना चाहिए ना.
वो भी एक इंटेंशन होना चाहिए कि दिमाग का डस्टर अभी इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है. He himself admits it when Krishna chastises him. Main task is to remove that delusion, that attachment. यानी कि मेरे को ऐसा लगता है, और मैंने देखा भी है ये, कभी भी कुछ कंफ्यूजन है, आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल कि मेरे पास में एक पूरा हिंदी का ट्रांसलेशन था भगवत गीता का. एक छोटी सी किताब थी, मैं उसको लेके ही घूमती थी मेरे बैग में, कई बार पढ़ी हुई है. तो कभी कभी मैं कहीं से भी खोल के उसको पढ़ना शुरू करती थी. यानी कुछ है क्वेश्चन माइंड में, तो उसको पढ़ने लगो ना, तो जैसे जवाब आ जाता था अपने आप ही. तो गीता हैज दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू क्लीन द डिल्यूजन, रिमूव द कंफ्यूजन. और एंड के अंदर भगवान ने यही पूछा है अर्जुन को, हैज योर डिल्यूजन गॉन नाउ. उससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने पूरा जो भी बोला है भगवत गीता में इज ऑल फॉर रिमूविंग डिल्यूजन. तो हमारे को कभी भी कुछ डिल्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है, तो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू भगवत गीता, है ना. ये प्रूव होता है ना उससे. और क्या क्या डिल्यूजन नहीं था, एवरी 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 एक्सक्यूज पॉसिबल अर्जुन हैज गिवन देयर. Suchi, you remember Dr. Mahesh Parikh? हाँ. He was और a देखो एंड में भी psychiatrist. अर्जुन ने क्या जवाब दिया है. सॉरी अंजलि, कुछ बोली, मेरे को तेरी आवाज सुनी लेकिन क्या बोली वो नहीं सुना. I said, do you remember Dr. Mahesh Parikh? हम्म. He was a psychiatrist हम्म. who was absolutely sure that for all the problems, all you need is the Gita. हम्म. And then he went on to do his thesis on that. Yes. That Bhagavad Gita Yes. is a solution for psychiatric problems was his thesis. Yes, yes. Gita has all the answers to all the psychiatric problems. And this is not anybody less saying, somebody who's a seasoned psychiatrist who's saying this. मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है statement. Yes, Lord, the delusion has gone. I have realized what my Swadharma is. So if we want to say this statement, we must turn to Bhagavad Gita. If ever we want to say this, we must turn to Bhagavad Gita. Both the beginning and the end of the Gita, it is clear that the removal of delusion is its central message. This is the purpose of the Gita as well as of the whole of Mahabharata. Vyasa had said right at the beginning of Mahabharata. अच्छा, वो महाभारत लिखने के वक्त उनका उद्देश्य क्या था? He was lighting this lamp of history to dispel delusion in the minds of people. तो मेन मैसेज जो भगवत गीता का है, पर्पस का हो, is to remove this delusion. तो जब कभी भी हम मोह से ग्रस्त हों, तमस में पड़ जाएं, बाहर निकलना हो, तो भगवत गीता के 2-4 श्लोक ही पढ़ लो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, थोड़ी सी समय वो लेकर उसको पढ़ो और सच में क्लीनिंग होती है, फर्क पड़ता है. विसिटी करने के बराबर ही. कहीं से पढ़ लो works if you have gone through the whole thing once. हाँ. Otherwise, it won't make sense. You have to go through the whole Bhagavad Gita once and then कहीं से पढ़ लो, तुमको आंसर मिलेगा. वो भी But it's सही है. not just the Bhagavad But what Gita. I'm saying also works. Yes. Let me tell you. Yes, it works. I'm not It saying it works. doesn't work. But if there is basically no understanding of हाँ. At philosophy or least anything like थोड़ा that, तो वो तो क्योंकि ओवरऑल background नहीं है जानकारी है, ना, राइट. हाँ, तो वो काम नहीं करता. In that case, what I would like to say, even reading the biographies of saints Yes. does the same thing. Correct. I've had answers coming to me from random opening of pages in Sai Charitra. Mm-hmm. So in reading of the lives of any saints, Mm-hmm.
There, so you don't even have to read the whole book. You just read at random, आ जाएगा answer. वाह, और किसी को कुछ कहना है? आंसर कहीं से भी आते रहते हैं मैम. द यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग अस सिग्नल. अभी कोई शेयर कर रहा था मेरे से, शी हैड लॉट ऑफ फेथ इन शिवा, एंड वो इतनी कोई डिल्यूजन में ही पड़ी हुई थी. तो बोलती मैं ऐसी, मतलब गुस्सा थी भगवान से उस समय. बोलती उसी समय मैं बैठी हूँ और बोल रही हूँ क्या है ये, जा ही नहीं रहा या ऐसा हो रहा है. शी वाज वेरी एंग्री एंड सडनली शी सीज अ कार. और शी सडनली स्टार्टेड सेइंग दैट शिव शंभो करके दैट मंत्र, शी स्टार्टेड उसका वो जाप करने लग गई. And she had an image of Lord Shiva with that particular mantra. Suddenly she saw a cab going with the same image of Shiva जो उसके मन में था, सामने से गया. मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे Yeah, I वो can goosebumps imagine. आ रहे हैं. I Yeah. can So imagine. so she was so, मतलब उसका एक Yes. उस कनेक्शन बना हुआ था. एक बार आपका हाँ, कनेक्शन हो जाता है तो यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू. फिर वो कहीं से भी आए वैसे. But बिल्कुल we कहीं just से have भी to be डायरेक्शन आ open. जाता है. If you are ready to Open. take direction, it comes like this. How beautiful. This is so beautiful. Thank you for sharing. No, another thing I would like also to share here, yeah, हम Yeah. लोग WhatsApp messages we just take it for granted कि कुछ भी नहीं मैसेज नहीं, आता है. कभी कभी But I'll desperately. tell you, whenever I've had a problem in the last 1 year, I'm seeing appropriate message. I have a friend who's a Sai Bhakt. She keeps sending messages, तो उधर थोड़ा taking for granted हो जाता है. लेकिन I have seen even with her, and she sends it on the group. It's not on individual message to me. But even then, there are sometimes when she sends the message, it's appropriate for the question that's in my mind. As if it is meant for you. Yeah, and second thing is it's not just her. There are times when people who are not necessarily Sai Bhakt have sent me messages, either with a Sai Baba photo in it or without the photo in it, but the message is answering my question. Wow. And it's happening so often, like वो बोलते हैं ना, क्या उसको word है, it's not कनेक्शन मैम, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका. आप नहीं दोनों के नहीं, तो मैं रोज डायरेक्ट पढ़ती हूँ. कनेक्शन की नहीं बात है. आजकल वो कुछ वर्ड यूज करते हैं बहुत, कि आपको वो सेम सेम नंबर दिखेगा, सेम सेम कुछ, वो सिंक्रोनिसिटीज, हाँ. इसको सिंक्रोनिसिटीज बोलते हैं. तो इट इज वेयर यू फील समथिंग इज अ कोइंसिडेंस, but it's not a coincidence. It's meant to be an answer for your question. Universe is sending you a message. It's like Yes, that. कोई ना yes, कोई yes. बहाना उसका बनता है, जरिया बन जाता है. तेजल, तेरे को कुछ कहना है? Okay, come, let's read ahead then. Honesty and straightforwardness make one worthy of the Gita's message. This introduction to Arjuna's condition helps us greatly in understanding the rest of the Gita. We should be grateful for this. It also helps us in another way. It reveals Arjuna's straightforwardness and honesty. The word Arjuna, in fact, means one who is honest and straightforward in nature. He candidly told Krishna all that he felt and thought, hid nothing from him, and ultimately surrendered to him totally. In fact, he was already his devotee. When he made Krishna his charioteer and entrusted to him the reins of his horses, he had got ready to give into his hands the reins of his mind also. Let us do likewise. Let us not think that, unlike Arjuna, we do not have Krishna to guide us. Let us not get caught in the fallacy that Krishna was a historical person. Everybody has Krishna residing in his heart as the indwelling self. He is nearer to us than the nearest. Let us bare our heart with all its impurities and weaknesses before him and say, O Lord, I take refuge in you. You are my sole guide, my master. Show me the right path and I shall follow it. If we do so, Arjuna's charioteer will be our charioteer too. We shall hear the Gita from his own lips, and he will lead us to victory. Can I share Yeah, something here? please. I'm in a mood to share today. बोलना.
I wanted to say this, that there is this person whom I have been listening to, and he's doing a lot of sadhana. So he was saying that the thing about when you start doing a sadhana and you have an Ishta Devata, you have to drop all your pretenses. Yes. You have to be very honest and very true with that God, and you have to say whatever is there in your mind. You don't believe, say I don't believe. Huh. Don't say, pretend to believe. So even like many times we need help, but we feel कि कैसे help ले लें, and then we say कि नहीं मैं खुद कर लेता हूँ. But in front of God you have to say I'm helpless. I'm not able to find the solution. Give me the guidance. Send someone to help me. So he says that kind of a thing has to be your attitude. That you have to be totally open, totally frank, totally straightforward, like how Vinobaji has mentioned about Arjuna. वो हो गया 2 दिन बाद मेरे को एक मैसेज आता है, टॉक टू मी फ्रीली, whatever is in your mind. Who knows better than you? So Very that true. is how it is. 110%. Therefore, being Absolutely. honest with yourself is also the first step. The thing is, we have become masters at deluding ourselves. We have mastered it, right? You're right. Persona all the time. Yeah. Another message I read the other day is, I think it was an Osho ka message. We are constantly trying to, fit our image into how the people perceive us. So we forget who we ourselves are. Yes. I think today only. Osho का ही था. हाँ ना, आज ही आया था वो शायद मैसेज. अजय ने भेजा था. Very true. Very true. वो एक सॉन्ग ऑफ द बर्ड की एक कहानी है कि मुल्ला नसीरुद्दीन सॉ अ टर्की. टर्की पता है ना, थोड़ा मुर्गे के जैसा ही होता है लेकिन उससे बड़ा होता है. तो he says, what dirty hen, it's not kept well. He gets clippers and clips off its extra feathers, and now it is like a decent hen. Then Father Joe Pereira is the writer, no? I forget. Anyway, whoever. No, I can't remember his name. Anyway, I forgot the author name. It's written by a priest that I know. I mean, it's a compilation. And so this is the story he has picked up from various places. So this is one of the stories he's picked up. And then below that, he will write his own comment. And his own comment is, do not fit the man to the coat. Correct. So this is so true and said by so many people in so many different contexts. All the great people. This is the common thing in them. So one, we have to be honest, candid, at least to yourself in front of your Devta, Ishtadev, as you pointed out just now. At least be true, honest, sometime, somewhere, someplace. So let us do likewise is what Vinoba Bhave is saying. Let us not think that unlike Arjuna, we do not have Krishna to guide us. ये कई बार लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमेशा ये तर्क देते हैं, and that's where they lose out. वो निराशा भरी स्टेटमेंट होती है. If you are honest, you will have Krishna to guide you. But हम अपने आप के साथ में भी सत्यता नहीं बरतते. The moment you are honest, तुम लोगों ने सबने मेरे साथ में विजिट किया. अच्छा, I don't know, प्रियंका and तेजल are new to it, but all the same, हमेशा मेरा एक ही चीज कहना होता है, be ruthlessly honest with yourself. Because when you are ruthlessly honest in admitting what the problem is, what the issue is, however small it may be, however trivial it may seem, you might think that it is nothing that we should give too much importance to.
But if it is an issue with you, it is an issue. Accept it. The moment you accept it, it as if vanishes. And the solution is there in front of you. और मैंने कई बार तुम लोग कहा है कि just do that tapping, accept it. And then you will find that the solution is just coming. तुम्हारे माइंड में ही आ जाएगा, तुम्हारे को सामने से कोई बता देगा, तुम्हारे कोई कुछ सूझेगा सही करने का, because answers are all with you. कभी तो करते करते ही आ जाता है, right? कभी कभी करने के बाद भी आता है. So be honest with yourself is what is being told to us. And the moment we are ruthlessly honest, Krishna is there for us. We must not think कि हमको कहाँ से कृष्णा मिलेगा. So everybody has Krishna residing in his heart as the indwelling self. क्योंकि आंसर सारे हमारे अंदर ही हैं. He is nearer to us than the nearest. हम जिसको भी अपना सबसे करीबी जानते हैं. आजकल एक व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज मैंने 2-3 बार आ गया मेरे पास में, इससे समझती हूँ इट मस्ट बी गोइंग अराउंड डूइंग इट्स टर्न्स कि who is your lifelong partner. So it is not your parents or children or wife or husband, it is your body. तो उसको भी nearest बोलते हैं. But this is nearer than the nearest. I want to say that. When you are honest with yourself. बॉडी इस जन्म में छूट जाता है, वो नियरेस्ट और द नियरेस्ट ये जन्म के बाद भी चलता है तुम्हारे साथ. Exactly. So what we identify with is decides the nearest. So this is nearer than the nearest is what we have to remember. And let us bear our heart with all its impurities and weaknesses before him and say, oh Lord, I take refuge in you. You are my soul guide, my master. I think we should write these sentence and keep it in front of us somewhere. है कि नहीं? So in times of need, we can use it. Oh Lord, I take refuge in you. You are my soul guide, my master. Show me the right path and I shall follow it. ये बहुत जरूरी है. नहीं तो एक डॉक्टर साहब कहानी सुनाते थे कि ये पर्वतारोही कोई पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो गिर गया. गिरते गिरते उसके हाथ में एक रस्सी आ गई. हिमालय पे चढ़ाई कर रहे थे और वो उस रस्सी से लटक गया और आवाज दे रहा है. अंधेरा हो रहा था. ऑलरेडी इट वाज लेट इन द इवनिंग और कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज दे रहा है बार बार, कोई है, कोई मदद करे, कोई है. तो उसको एक आवाज सुनाई दी कि मैं हूं तेरी मदद करने के लिए, हाथ छोड़ दे. कोई है, कोई मेरे को ऊपर खींच लो. तो कह नहीं, तू हाथ छोड़ दे. लेकिन उसने नहीं छोड़ा. मदद के लिए पुकार रहा था, मदद के लिए जो आया वो कहता है तू हाथ छोड़ दे, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा. सुबह में जब दूसरे लोग उसको ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा कि वो रस्सी से लटक रहा था जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊपर, और वहीं पर वो मर गया. तो हम भगवान को बुलाते हैं मदद करने के लिए, बट वी डोंट लिसन. आई शैल फॉलो इट. तो जब तक वो सरेंडर नहीं आएगा अपनी बात कहने का और ऊपर से उनकी बात सुनने का, जो अंदर से आती है अवधारणा, उसको मानना चाहिए. एक ये अंदर वाली बात है. दूसरा है कि गॉड में हेल्प यू थ्रू समबडी एल्स ऑल्सो. तो वो भी एक स्टोरी है कि एक प्रीस्ट ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ सो मच कि मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ. बाढ़ आती है उस गांव में, ही स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द चर्च का स्टीपल. तो एक बोट वहां से जाती है, बोलती है एक ही आदमी की जगह है, आप आ जाओ. इसे नहीं नहीं, भगवान मेरे को बचाएगा. ऐसे काफी बोट्स जाते हैं, हर बार वो बोलते हैं भगवान मेरे को बचाएगा, वो मर जाता है.
फिर वो मरने के बाद वो पूछता है भगवान को, आप तो आए नहीं मेडिसिन पे, आप पे बहुत विश्वास करता था, सही मैं इतनी बार तो आके गया, हर बार बुलाया, तुमने मना किया, मैं क्या करूं? Exactly, we don't follow. एंड नो वी जिद पे एक्सपेक्ट अड़े द रहते हैं। अवर इमेज ऑफ गॉड ना, कि हमने सोचा कि भगवान ऐसे दिखता है तो उस शेप में Exactly. आना चाहिए। That is, वही तो बात है ना कि जब तक टोटल सरेंडर नहीं होगा तब तक ऐसा विचार रहेगा। तो therefore that total surrender means this is included कि भाई मेरा इमेज जो है भगवान का वो ही नहीं, आई एम टोटली सरेंडरिंग। जब सरेंडर हुआ तो वो ऐसा अड़चन रहता ही नहीं है क्योंकि सरेंडर टोटल नहीं है। तो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन दैट यू ब्रॉट दिस अबाउट। तो आई शैल फॉलो इट। तो कैसे फॉलो करने का है वो, सरेंडर कितना होना चाहिए। चलो आज सबके पास में इसका एक अच्छा सा चार्ट बना के, डिजाइन करके, ड्राइंग करके, बॉर्डर लगा के, है ना, अपने अपने स्टिकी बोर्ड के ऊपर लगाओ, मैग्नेट से फ्रिज के ऊपर चिटका दो। If we do so, Arjuna's charioteer will be our charioteer too. How beautiful it would be. So let's appoint Krishna as our charioteer by writing this statement and following it. We shall hear the Gita from his own lips and he will lead us to victory. ऑलरेडी 350 हो गए हैं। सेकेंड चैप्टर शुरू करें कि रुक जाए, मेरे को लगता है ना। बोलो, स्वधर्म के ऊपर क्या काम करोगे? मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्या काम होगा? टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आज हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, वीकनेसेस हैं, जो भी हमारे को निकालनी है, हम तैयार हैं। बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स ऑन दैट and see how much of this you really mean. How honest can we be? और असल में लाइफ के अंदर कई बार तुमने किया भी होगा, लेकिन हम ऐसी चीजों को जल्दी से भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रखते। There must have been times when you have just surrendered and allowed the nature to work through you, and things have gone all right with you then. तो उन बातों को थोड़ा सा याद करो and get that feeling alive. And this statement should help you to recall that feeling. That is the process that I would like to follow. है ना, क्योंकि हमारे सबके साथ में चमत्कार कभी हुए नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। There have been times when we have just surrendered and the right things have just happened. We have been guided to do the right thing. Rightful action has happened to us. And it has served us in good stead. और हम काफी समय से उसको रेजिस्ट करते रहे हैं, हो सकता है हमारे पास में बार बार आया है, जैसे अंजलि वाली कहानी में था, लेकिन हम उसको रेजिस्ट करते रहे। लेकिन जिस दिन हमने मान लिया कि अच्छा अभी और कोई चारा नहीं है, ये कर लो, उस दिन सब कुछ सही हो जाता है। क्या लगता है? worthwhile thing to do? Yeah. प्रियंका ने आज कुछ नहीं बोला। Sumit? Actually, I joined a little late, ma'am, and then there is a little network issue as well. So अच्छा, I was just listening. तेजल ने तो ग्रुप ही अभी ज्वाइन किया। वेलकम तेजल। समझ में नहीं आया because I didn't have Telegram. So while downloading and all that, उससे टाइम लग गया। time लग गया. From next Thursday I'll be ready. Yes. Just first chapter read करके पूरा हुआ है। You have the book? I do. So then first chapter पढ़ो, और मैंने उसका हिंदी में
ऑडियो बुक भी भेजा है Okay. चैप्टर 1 का. ठीक है. Will it I'll be on send the it again maybe today Will it be because I on the have group? sent it when we started. ठीक It है. is there on I'll the go Telegram through it. group. I have made the earlier post also visible for anybody who joining new. So you will be able to get it. ठीक. तो चाहिए तो मैं उसको वापस से नीचे पोस्ट कर देती हूँ if you people have not been able to find it. And after having to read, when you listen to that audio, no, I find it very powerful. Please do. I'll definitely go through it. क्योंकि वो एक reiteration होता है ना. हाँ, रिविजन हो जाता है. सुमति ने क्यों मुंह इतना टाइट बंद किया है? कुछ बोलना है? ऐसे टाइट पकड़ के बैठी है ना. सुमति ने आज सिर्फ मुंह टाइट नहीं बंद किया, उसके बाल भी बहुत टाइट बांध लिए. वो तो तेल वेल लगा के बैठी है, सर्द होने का होएगा. आज वो टाइट मूड में है. चलो, कोई बात नहीं. It's not necessary that every time you have to. नहीं यार, तेरे मुंह नहीं में मैम, ये अभी डालना. मैं साइलेंट कैंप जाके आई, पता नहीं मेरे को खुद को लगा कि आई एम नॉट टॉकिंग बिकॉज वो Right. इतना दिन से उसी में थी ना, तो आई अच्छा, डोंट कितने फील दिन लाइक का था? टॉकिंग. मैं शिमला जाके आई मैम, अभी 2 दिन पहले ही रात को आई, Oh, is it? परसों रात को आई. Okay, okay. Enjoyed. हाँ मैम, अच्छे से Very. हुआ. और क्या चाहिए? प्रॉब्लम नहीं हुआ ना वहाँ पे? हाँ, लकीली हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छे से स्मूथली टुडे कुल्लू का एंड आते अभी वक्त भी 2 घंटा पहले बहुत हो गया है. अच्छा. हाँ, मैंने हाँ, खुद कुल्लू देखा नेक्स्ट भी टू है द वहां बस पे स्टैंड